Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India. Welcome back to our channel. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और जैसा कि आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा, हम लोग हैं अभी विंटर वेकेशन पर और हम लोग कहाँ आए हुए हैं? We've been at Las Vegas for the past 4 days. तो हम लोग अभी लास वेगस में हैं और आज हमारा लास्ट डे है। तो आज क्या करने वाले हैं हम? आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारे बैग्स गाड़ी में जा चुके हैं और we're going to the Hoover Dam and the Red Rock Canyon. तो अभी हम लोग जाएंगे हूवर डैम और कोई रेड रॉक कैनियन है यहाँ पे, वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम लोग सीधा कैलिफोर्निया जाएंगे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, राइट? तो चलिए आज हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी निकलते हुए आप लोगों को अपना होटल दिखा देते हैं कि किस तरह के होटल में रुके हुए थे हम लोग, राइट? चलो। This is our hotel room, the kitchen part of it, where it has a coffee machine, a microwave, an oven, a refrigerator, कि अगर किसी को everything खाना you'll बनाना need. हो तो बना के खा सकते हैं। And also a toaster. Forgot to mention the toaster. Everything here. It also has this anonymous door that we have no clue what it does. Yeah. This is our living room, and the couch can turn into a bed. Yeah. There's all the sheets we use. You will see all the mess everywhere because we are checking out. And then this is a table we can sit at to eat. Dining table. That's a closet right there. That's the way out. This is the bedroom. It has a TV, king-size bed, 2 drawers, and lovely paintings above it. And it was jacuzzi, which we never used. We never got chance to use. Yeah. And then there's a wash basin here. And this was the bathroom and toilet. You will see the mess everywhere now. And there was 2 ways into the bathroom, so you didn't have to go all the way around. This is another closet. Okay, you wanna show the view from our window? It's not much of a view, but it's interesting. There's Virgin hotels over there, those tall buildings. और नाइट में काफी अच्छा लगता है यहाँ से ना, Yeah. दिन में ज्यादा नहीं समझ। And this is the view from the other window. It's same view. Except you can see there's an airport over there, so you can always see airports taking off and coming back. There's Venetian hotels again, right there. No, that's not Venetian. That's Oh, Virgin. Virgin Sorry. Hotels. Yeah. Okay, let's go now. Time to say bye bye to our hotel room. Bye bye, hotel room. Are you gonna miss it? Yes. What you gonna miss the most? That bed. It was comfy and easy to bounce on. ओके लेट्स गो। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हूवर डैम। तो बस अभी हम लोग चेकआउट करेंगे और हम लोग फिर हूवर डैम जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैग लो अपना। Reservoir. This is one of the largest man-made lake in the United States. Man-made, not natural, man-made. So huge. That's the curved part of the
डैम है ये एरिज़ोना और नेवाडा स्टेट के बॉर्डर पर है। ये बहुत बड़ा सा ब्रिज है ह्यूमंगस। ये पावर प्लांट है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। क्योंकि एरिज़ोना और नेवाडा दोनों स्टेट के बॉर्डर पर है तो दोनों स्टेट का टाइम यहाँ पे दिखाता है। ये इस साइड नेवाडा स्टेट है और ये रिवर है बीच में, कोलोराडो रिवर। और उधर जो बिल्डिंग दिख रहा है ये एरिज़ोना स्टेट का है। दोनों स्टेट के टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है। What? The time zone change. ये इधर नेवाडा दिखा रहा है, इधर एरिज़ोना। Give me the water bottle. Alright, It's right here. it's right here. जैसे नाइग्रा फॉल है ना, यहाँ पे एक तरफ कनाडा बॉर्डर है, दूसरी तरफ यूएस बॉर्डर है। ऐसे ही ये डैम बना हुआ है, एक तरफ एरिज़ोना बॉर्डर है, दूसरी तरफ नेवाडा है। तो दोनों को कनेक्ट करता है ये दोनों स्टेट्स को, यूएस के दोनों स्टेट्स को। पहले जो आपने साइड देखा वो नेवाडा का साइड था और ये एरिज़ोना वाला साइड है। ये टाइम भी दिखा रहा है, यहाँ पे क्लॉक है एरिज़ोना का और दोनों स्टेट में 1 घंटे का डिफरेंस है। एरिज़ोना का टाइम 1 घंटे आगे है और नेवाडा का टाइम 1 घंटे पीछे है। टाइम जोन डिफरेंट है। ये पूरा रिवर है। Otherwise, naturally, this would not have been there. Coming from there, what would just provide? Now they controlled it from this side, stopped it, controlled through those. You see narrow channel, right? Yeah. So you will have just 5 connections. I almost did. This is where the dam stops. It shuts off all the water, and it has some little pipes that go under, rushing water through. And you know how wind turbines spin when the wind blows at it? It's basically the same thing, except the water instead of the wind. And those are what channel the hydroelectricity that the pipes make. And these are tilted. Yeah, कितने तिरछे हैं देखो ना। ऐसे लग रहा they're है गिर जाएगा। tilted so it can reach the bottom. I don't think you can see in the video, but like it's going down and connected to that ship. Over there. This is humongous, like so big, right? This is huge. You do not want to fall into that thing. No. कितना बड़ा है, कितनी बिजली बनाते हैं लोग यहाँ पे ना। और ये एरिज़ोना और नेवाडा के बॉर्डर पे है। एक साइड नेवाडा है, एक साइड एरिज़ोना है। There's 2 clocks. There's one over that way and one that way. Like, दिखा दिया I'll मैंने। show you. वो दिखा दिया। There's one over there, and there's one right here. This is Arizona and that one is Nevada. बीच में river है ना? Yeah, that Arizona one's a bit off. It's supposed to be an hour ahead, but No, it is. it's not. It says 11:10.
Ishi, which one you want? Ishi, which one you want? This one. Okay, That then one. go tell daddy. 30. Okay, go tell daddy, both of you. We are inside the Hoover Dam looking at the power plant. This is one of the big pipes that carries water to make electricity. What's the dam? We are 526 feet down right now. What you just saw were generators. Those generated electricity. They were like big fans. You know those fans you have at home? Except imagine like, I don't know, 50 times the size of that. And they were powered by water instead of wind. They generated electricity, which went through big wires and took it to a bunch of those cables. That's how those work.